Hello everyone, this is Pulkit Agarwal, the history faculty at the Youth Destination IAS. So today we are going to discuss about the questions of Haryana PCS examination which was held on 12th September 2021. In this particular examination, in the GS paper 1, there were 100 questions. And out of which there were 17 questions related to your history. 17 questions related to your history. And as a faculty of history, I am going to now discuss with you the kind of questions which came in the Haryana PCS examination. And along with that, I am going to rate the difficulty of the question, difficulty level of the question. And along with that, हम ये भी करने वाले हैं that the strategies you could have employed in order to solve the question if you directly do not know the answer, right? So all these things we are going to do in this particular lecture. So sit back and enjoy. Now, we are going to take each question. I want the answers from you people also, and if possible, the explanations from you also. And I will give my own explanation. Okay. First of all, the point is, first question says, who among the following is known as Virodhi Kavi or the rebel poet? Virodhi Kavi or the rebel poet. Options are Suryakant Tripathi Nirala, Qazi Nazrul Islam, Sumitra Nandan Pant, Mohan Rakesh. So out of these, who do you think is the rebel poet? And what do you understand by the term rebel poet? Okay. One answer which I've got is Sumitra Nandan Pant. What about others? What do you think is the answer to this question? Okay, fine. What is the explanation for that? If you are saying Suryakant Tripathi Nirala. Okay, fine, good. So the correct answer to this particular question is A. That is your Suryakant Tripathi Nirala. Suryakant Tripathi Nirala. And rebel actually means someone who challenges the authority of the society, who challenges the things which are prevalent in a negative manner in the society. So this particular person, he was challenging the society, the ideas which were present during the times of colonialism, right? So in his writings, what we see, what we come across, that he was challenging the authorial structure of the society, right? Like for example, this is Suryakant Tripathi Nirala. Another example I can think of is your Saadat Hasan Manto. Saadat Hasan Manto can be seen as a rebel writer. Why rebel writer? Because he was someone who was writing on the times of partition, that what were the problems which the people were facing during the time of partition, and what were the problems which the women in particular they were facing during the time of partition. वही बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखते हैं सादत हसन मंटो, मैं सिर्फ दुनिया की बुराई को सफेद चौक से काली पट्टी पे लिखता हूं ताकि बुराइयां और ज्यादा नुमाया हो सके. समझ आई बात? सो पॉइंट इज ही इज जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. अगर आपको मेरी बात इतनी बुरी लगती है तो मतलब ये सोसाइटी ही रहने लायक नहीं है. सो दीज वर द लाइन्स ऑफ सादत हसन मंटो. सिमिलरली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला also talks about the problems in the society, right? So the correct answer to question number 1 here is Suryakant Tripathi Nirala. Suryakant Tripathi Nirala. Perfect? Okay. Let's go to the second question. In which of the following place or places are the famous Ashokan pillars found? Famous Ashokan pillars found. Sanchi, Sarnath, Lauria, Nandangarh and Amravati. ओके, बहुत सिंपल एक चीज है. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें श्योरिटी किसकी है. ये सारनाथ है, ठीक है. श्योरिटी हमें सारनाथ की कंप्लीट है. वी नो कि सारनाथ में तो पिलर था ही था. नाउ लेट्स सी इन द ऑप्शंस कि हम इसके थ्रू कुछ सॉल्व कर सकते हैं या नहीं. इफ वी नो द पिलर was in Sarnath,
then the first goes out of the window, right? The first option goes out of the window. Now we are only left with three other options. We are only left with three other options. At least एक तो गया. So point is कि we will see कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. Correct? अब बताओ. Now look at the empire of Ashoka. Think about the empire of Ashoka कि वो कहां पर था, कहां पर नहीं था. And then give me this particular answer. Give me this particular answer. सोचो. अच्छा. Okay. और Lauriya Nandangad, where it is? Lauriya Nandangad is in Bihar. Lauriya Nandangad is in Bihar. And from here, we find the pillar of Ashok. Right? Bihar hai. And the capital of Ashok was Magad, which was again in Bihar. So a pillar will be there approximately. That is a kind of logic we can apply. That, okay, if his capital is there, his pillar will also be there. So kahin na kahin that logic can apply. So Lauriya Nandangad is the correct answer to this. So now we have 2 and 3. Now let's check out. So the second option also goes out of the window. Second option goes out of the window. So we are only left with 1, 2 and 3 and option number D, that is all of the above. What about Sanchi? What about Sanchi? Where is Sanchi first of all? Madhya Pradesh. Do we find anything in Sanchi of Ashok? Think about it. Stupa we find, and also along with the stupa we also find the Ashokan pillar, right? Because Madhya Pradesh, or you can see that is a part of central India, and it is something which is a very, very important trading network of the Mauryan Empire. It is a very, very important trading network. जो पूरा central India है, that was a very, very important trading network. So when it was a very, very important trading network, the point is the pillar will actually be found there. That can be one of the logic. और second तरीका क्या है इस question को solve करने का? That you take and make a list of all the pillars of Ashoka कि वो exactly हमें कहाँ मिले हैं. And when you know that particular list, तो आपको exactly पता लग जाएगा that the pillars are located in Sanchi, Sarnath and Lauriya Nandangad. Lauriya Nandangad. So point is still we cannot do this particular question because C वाला भी correct हो सकता है और D वाला option भी correct हो सकता है. Right or wrong? हो सकता है because अभी हमें नहीं पता कि अमरावती में है या नहीं है. अब अमरावती कहां पर located है? Andhra Pradesh, right? And the point is, Ashokan Empire was not so much spread towards that particular area. It was not so much spread. It was only later on when the Satavahanas and other people they started to come that the Buddhism started to spread in that particular area. So the pillar was not exactly located in Amravati. So we can see that the option number D is now out of the window. So the correct answer to this is option number C, that is Sanchi, Sarnath, Lauriya, Nandangad. तो ये हो गया एक तरीका. सेकंड तरीका आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप एक लिस्ट बना लो कि अशोका के पिलर्स कहां पर थे, अशोका के माइनर इंस्क्रिप्शंस कहां पर थे, मेजर इंस्क्रिप्शंस कहां पर थे, उनका एक अलग अलग मैप बना लो. एंड व्हेन यू मेक दैट पर्टिकुलर मैप, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो you will be easily able to tackle the questions, right? तो ये भी एक तरीका है. या फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अशोका का ज्यादा इन्फ्लुएंस कहां पर था, राइट आलम? ओके, लेट्स गो आगे. हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज who were the chief painters of Hamzanama under Akbar's order? Chief painters of Akbarnama under Akbar's order. कौन थे? सी पक्का? सईद अली अब्दुस समाद. इसके अंदर अब्दुस समाद के स्पेलिंग थोड़े गलत हैं. इट इज योर अब्दुस समाद. पक्का? 100% श्योर? ओके फाइन, दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अब पॉइंट इज कि फ्यूचर में ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है. ठीक है. सबसे पहले दे कैन एक्चुअली आस्क यू दैट व्हाट वाज हमजानामा. व्हाट इज हमजानामा? They can actually ask you, what is Hamzanama? What does the name of the book or the title suggest? क्या था Hamzanama के अंदर? सबसे पहले तो वो चीज आ सकती है. आ सकती है नहीं आ सकती? आ सकती है. तो मैंने क्या बोला था?
फ्रॉम द क्वेश्चंस इटसेल्फ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि और आगे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. बताओ हमजानामा क्या था? नहीं? I'll tell you. What happens is Hamzanama is an illustrated manuscript. Hamzanama is an illustrated manuscript which took 14 years to complete. Kitna? 14 years to complete. It has approximately 1400 pages also. 1400 pages of paintings. ठीक है? And point is Hamzanama क्या है? हमजानामा इज एक्चुअली एन एपिक. इट्स अ टेक्स्ट जिसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के एक अंकल के बारे में बात करी गई है. हिज एक्सप्लोरेशंस, हिज फाइट टू डिफेंड इस्लाम, राइट? So that is what Hamzanama is all about. Hamzanama is about the uncle of Prophet Muhammad who is trying to save Islam from the people, right? From the people who are not actually following Islam, from the corrupt people. So that is known as your Hamzanama. It took 14 years to complete. It has 1400 pages and the chief painters were Sayyid Ali and Abdus Samad. Sayyid Ali and Abdus Samad, right? So these were the two major painters. लेकिन इसमें से एक third question भी बन सकता है. From this question only we can actually get the third question. Like you sometimes get in UPSC also. क्या हो सकता है? Like all the other names. सबसे पहले तुम ये search करो that what are these other names? What exactly are their professions? ये क्या करते हैं? What does Bizard do? What Daswant do? Manohar do? Bishan Das do? इन लोग हैं कौन आखिरकार? That should be your motive कि ये लोग आखिरकार हैं तो हैं कौन? तो इसमें सबसे इजी आइडिया ये है, हमें समझना पड़ेगा कि अब जब हम बुक्स उठा के देखेंगे that these are also the painters who were present during the time of the various Mughal emperors. So now what you need to do is you need to make a list of the Mughal emperors. ठीक है? सबसे औरंगजेब को लीव आउट कर सकते हैं. औरंगजेब थोड़ा खिसका था तो पेंटिंग और म्यूजिक बंद कर दिया उसने. तो औरंगजेब को हम खत्म कर सकते हैं. बाबर को हम ऑलमोस्ट खत्म कर सकते हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, वो आएंगे हुमायूं, बिकॉज हुमायूं एक्चुअली गॉट सईद अली एंड अब्दुल समाद फ्रॉम द कोर्ट ऑफ ईरानियन किंग शाह तशमाप. उसके कोर्ट से यहां पर लेके आया था इनको. तो हुमायूं कैन बी वन ऑफ देम, अकबर कैन बी वन ऑफ देम, जहांगीर वाज हिमसेल्फ अ पेंटर एंड शाहजहां. तो इन चारों मुगल एम्परर्स के टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे, वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर पेंटर्स. करेक्ट? तो ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं. अब तुम लोगों का काम ये है, यू नीड टू राइट अबाउट हमजानामा, यू नीड टू राइट दैट विच एग्जैक्टली ऑफ दीज पेंटर्स वाज प्रेजेंट इन विच ऑफ द किंग्स कोर्ट. समझ आई बात? एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमने खड़े खड़े बना लिए, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज मीर सईद अली. चलो, लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन, which is which language was used as the official language in the Satvahana age? Which language was used as the official language in the Satvahana age? बताओ. Okay. You think B? It's B. So the language was your Prakrit. What was the language? It was your Prakrit. Correct? Prakrit. Point is, NCERT mentions about Prakrit, but point is sometimes you also tend to get confused कि संस्कृत भी हो सकती है. Why? Because during the time of Satvahanas, the importance of Brahmins that started to increase. They started to give land grants to the Brahmins, right? Brahmadeya. So people might think it might be Sanskrit also, but it is not Sanskrit. It is your Prakrit. So there should be no confusion, right? Prakrit was the language of the common people, so it was the official language of the Satvahanas who ruled after the decline of your Mauryans in the Deccan part of the country, right? Hanji. हाँ. Point is, Telugu is some like अब क्या है कि like the languages take time to develop. The most important language, like the most oldest language was Prakrit and Tamil. They are the oldest languages. अब धीरे धीरे क्या है, when the people started to move into different areas, the languages started to develop from these parent languages. So Telugu developed at a later stage, right, than this. So that is why it is Prakrit.
जो प्राकृत है, इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड अलोंग विद तमिल. संस्कृत भी नहीं है. लोगों को लगता है कि संस्कृत है, बट संस्कृत इज ऑल्सो नॉट द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. राइट? ये एक हमें चीज समझनी पड़ेगी. ओके फाइन, ये इजी है. नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, हु असैसिनेटेड स्टीवेंस द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ टिपेरा नाउ त्रिपुरा इन 1931. इन 1931. इसमें तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड भी नहीं है. बताओ इसका आंसर. आई जस्ट गोइंग टू टेल यू द आंसर. बताओ क्या इसका आंसर है. इजी है, मतलब इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की नीड भी नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो इन दिस. ओके, स्टीवेंस द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उधर का जो लोकल ऑफिसर था वो, उसको किसने मारा था, दैट इज द सेंस ऑफ द क्वेश्चन. इसमें क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कुछ नहीं, सिर्फ नाम बताया जा सकता है किन दो लड़कियों ने मारा था. अब बताओ. नो, तुक्का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ तुक्का. सी, परफेक्ट. सी इज द, अच्छा नहीं, ये लॉजिक यहां पर ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं. ये पॉइंट यहां पर से सिंपल सा ये है कि जो चौधरी होते हैं वो बंगाली भी होते हैं. गुजराती भी होते हैं चौधरी, बट हाँ यहाँ पर जो चौधरी है शी इज अ बंगाली. तो ये स्पेलिंग जो है ना चौधरी की, वो बंगालीज बड़ी अरिक तरीके से लिखते हैं. उनके आर वाई नहीं आता, उनका आर आई आता है. वो चौधरी को चौधरी बोलते हैं, ऐसा कुछ अलग से तरीके से, मुंह ऐसा सा बना के. सो दैट इज योर शांति चौधरी एंड सुनीता चौधरी. राइट? ओके फाइन, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which dynasty ruled in the region of modern Haryana at the time of Ghaznavid invasion? At the time of Ghaznavid invasion. और Ghaznavid invasion का time था 998 till 1025, and the person responsible was Mahmud Ghazni. And the person responsible was Mahmud Ghazni. So who do you think was ruling at this particular point of time? Why not the Chauhans? Because Parmar, they cannot be ruling in Delhi. Parmars were actually in your central India. So that option goes out of the window. Kachwaha, they were in Rajasthan, right? To later with Jodha, Bai belonged to. Now the fight is between your Chauhans and Parmar. Oh, sorry, Chauhans and Tomars. So Chauhans kyun nahi? Why only the Tomars? क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ लिख के दे दिया यहाँ पे. आई हैव रिटन एवरीथिंग व्हिच कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर क्वेश्चन सॉल्विंग. आंसर इज ए, करेक्ट है. आई अग्री, आंसर ए है. बट आलम, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर आंसर नंबर ए? तुक्का. ओके, दैट इज द आंसर एक्सप्लेनेशन. गुड, बिल्कुल परफेक्ट बात. Good explanation. This is called explanation, right? Point is that the Chauhans, they became very powerful from the time of Prithviraj Chauhan, who started to rule from 1177, right? And that is the time when they started moving to Delhi also. Before that, the people who actually founded the city of Delhi, it is said that they were known as the Tomar Rajputs. And it is from the Tomar Rajputs that the Chauhans took over the power. So it has to be the Tomars who were there during the time of the Ghaznavid expansion or Ghaznavid invasion. People tend to get confused between Muhammad Ghori and Mahmud Ghazni. इन दोनों के बीच में भी है. But Mahmud Ghazni का जो time period है, that is 998 till 1025. And Mahmud Ghori का जो time period है, that is 1177 till 1206. That is something which we have to understand when we are talking about which dynasty ruled in modern Haryana, right? Okay, fine. Seventh question is, which statements are correct about the Bhakti saints Namdev? This is directly from the class notes we have been doing. Chalo. Yes, ये तो था. He was son of Taylor. हाँ जी मैम बताएं, whether he was from Gujarat or not.
ओके, नाम यूज करते हैं वो, आई अग्री, बट वेदर ही वॉज फ्रॉम गुजरात और नॉट, वो एक चीज बताओ. ओके, ही वर्शिप विठल ऑफ पंढारपुर. करेक्ट. अब देखो, you know two options are correct, 1 and 3. Now let's see कि 1 and 3 किस किस में आ रहा है. 1 and 3 ऑलमोस्ट सब में आ रहा है except for B. So B वाला ऑप्शन जो है that can be easily eliminated. So that is now we are only left with 3 parts. अब जो मेजर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो रही है, whether he was from Gujarat or not. And if you see Namdev, and we have studied also, Namdev was someone who belonged to Maharashtra and he was a prominent bhakti saint. Perfect. Namdev is someone who belonged to Maharashtra because he was also a very prominent saint in the Pandharpur movement. Pandharpur movement, that is the bhakti movement in Maharashtra. And he was there in Maharashtra only. Okay? Point is, he was not from Gujarat. That is something we also wrote that day. So he was not from Gujarat, but he was from Maharashtra. अब आपका वाला पॉइंट ये है कि उनकी बातें करते हैं जैनिज्म में, तो बिल्कुल करते हैं जैनिज्म में. पॉइंट इज कि अब क्या होता है, आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है, दैट इंक्लूड्स द वर्सेस ऑफ एवरीवन, वर्सेस एज इन द दोहास ऑफ एवरीवन. बाबा फरीद के भी हैं, नामदेव के भी हैं, सबके हैं उसके अंदर. पॉइंट इज कि अब क्या होता है, जैनिज्म भी ट्रैवल कर रहा है, तो नए नए आइडियाज जहां से मिलते जा रहे हैं, जैनिज्म इज ऑल्सो टेकिंग दोज पर्टिकुलर आइडियाज. तो इसलिए ही डिड नॉट बिलोंग टू गुजरात बट टू महाराष्ट्र, राइट. ही रोट मेनी अभंग्स. अभंग्स का मतलब होता है हिम्स, और इट इज द पोएटिक श्लोकास. पोएटिक श्लोकास. अभंग्स आर योर पोएटिक श्लोकास. परफेक्ट. अगर सेकंड इसमें आ रहा है तो ये रॉन्ग हो गया, डी में आ रहा है सेकंड तो ये रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट. I just wanted to explain you the meaning of abhang. The correct answer to this is your 7th का C. 7th का correct answer है your C. Okay, fine. Which among the following is not a Proto-Harappan culture? Which among the following is not a Proto-Harappan culture? Please. तुक्का नहीं, वो करेक्ट है. क्या बात है, अगर तो ऐसे तुक्के लगाता रहेगा तो एग्जाम ही क्लियर कर जाएगा. हाँ, क्या बात है आलम. पॉइंट इज कि समझो, प्रोटो हरप्पन का मतलब क्या होता है. सबसे पहले तुम्हें इस क्वेश्चन में प्रोटो हरप्पन से भी पहले तुम्हें क्या देखना है, इसके अंदर देखना है तुम्हें ये वर्ड नॉट. इसका यहां पर कुछ यूज है नहीं है. नॉट का बिल्कुल यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटो हरप्पन साइट. अब क्या होगा, आधे लोग इस नॉट को भूल जाएंगे कि नॉट जैसी कोई वर्ड था यहाँ पे. So you need to concentrate first of all on not. And what is Proto-Harappan? Second term which you need to know is Proto. What is Proto-Harappan? Harappan civilization is fine, but Proto क्यों बोल रहे हैं हम? Okay, और किसी तरीके से. एक होती प्री हरप्पन, एक मेच्योर हरप्पन, और एक प्रोटो हरप्पन which was your डीअर्बनाइजेशन फेज. ठीक है, पार्ट. तो इसमें से कौन सा लग रहा है कि डी तो हो गया. ठीक है, और प्रोटो हरप्पन का इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है. प्रोटो हरप्पन इसमें दो सेंस में यूज करा गया. अगर हम साइट्स देखें, इफ यू लुक एट द साइट्स ऑन द बोर्ड, दीज आर साइट्स विच आर मोस्टली देयर इन द प्री हरप्पन, प्री मेच्योर फेज. ठीक है, तो यहां पे जो वर्ड है प्रोटो, वो एग्जैक्टली चेंज हो जाता है. कैसे? हमने 3 वर्ड्स पढ़े थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री समथिंग जहां पे यू आर करेक्ट कि जहां पे एक नई चीज की शुरुआत ऑलमोस्ट होने वाली है लेकिन अभी नहीं हुई है. यहां पर हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, बट द पॉइंट इज कि स्क्रिप्ट्स हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड, बट वी आर ओनली रिलाइंग ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. तो यहां पे जो प्रोटो हरप्पन है, दैट इज समथिंग ऑफ अ साइट which is almost on the verge of getting into the mature site, but it is still not the mature site. It is still not the site which is having the great monuments and everything which we discover in Harappa. It is something which is preparing a background to the Harappan civilization, right? So in that particular context, Amri is one of them, Sothi culture is one of them, Kodiji
is one of them. What is not there is the zob. What is not there is the zob culture है ये आगे वाली point नहीं है. What is not there is the zob culture, right? So that is the question which we have to see. Okay, D is the correct answer. Okay, ये बहुत easy है. Who led the English company's embassy to Emperor Farooq Siyar's court? To Emperor Farooq Siyar's court. सबसे पहले हमें इसमें समझना है कि what was the time period of Farooq Siyar? What was the time period of Farooq Siyar? So the time period of Farooq Siyar was 1713 till 1719. 1713 till 1719. So that is something which we have to understand. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. ओके, तो क्या एक्सप्लेनेशन है? श्योर, क्यों? अब एक्सप्लेनेशन दे. उसी ने बोला था. अच्छा, तूने पढ़ा था, गुड. अगर इसको हम अगर नॉर्मली सॉल्व भी करते, हमें नहीं भी पता है आलम. पॉइंट इज थॉमस रो. थॉमस रो केम इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर. Thomas Roe came in the court of Jahangir, so he goes out of the window. Robert Clive, who participated in this battle of Buxar, he was much later, right? He was much later, so he also goes out of the window. ठीक है, अब अपने पास बचते हैं दो ऑप्शन, Gerald Ongear and your John Sermon. ठीक है, Gerald Ongear actually dies even before Farooq Siyar comes to the throne. Like even before Farooq Siyar is on the throne, Gerald Ongear is dead. तो अब उसका भूत तो नहीं आने वाला ना. तो only option we are left with John Sermon. ठीक है, अब ये तो आंसर हो गया. D is the answer, we all know. But the point is, what we have to do is that we have to not stop at John Sermon only. अब हमें ये देखना है कि what was the thing which John Sermon did in the Mughal court. उसने exactly करा था तो क्या करा था? क्या करा था जॉन सरमन ने? क्या लगता है? सोचो. एवरीबडी हु इज देयर इन द क्लास दे कैन थिंक अबाउट दिस कि जॉन सरमन ने क्या करा था, उसको क्या मिला था? बिल्कुल 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 बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट. तो क्या हुआ था कि फारूक सियार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया. काम तो कुछ था नहीं. he was like almost in wine and everything each time. So he was actually being treated by a doctor, a physician known as I think William Hamilton, right? William Hamilton ने उसको treat करा था, तो खुश हो गया, जैसे राजा खुश हो जाते हैं. फिर वो कहता मैं अपनी माला दूंगा, तो माला नहीं दी उसने. तो उसने क्या करा? He granted trade concessions that the Britishers as in not the private people of the company, but only the company, that is the East India Company, they can trade in Bihar, Bengal and Odisha. They can trade in Bihar, Bengal and Odisha without any taxes. Point was, when they had to get their goods from Bihar, Bengal and Odisha into India, they had to pay certain amount of tax. So Farooq Siyar became very happy upon his treatment. So he told John Sermon that what you can do is you can go into these particular territories, you can trade and you don't have to pay any sort of taxes. So that was the basic thing being done by your Farooq Siyar. Farooq Siyar.